ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮੈਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮੈਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਮਨ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਕਰੋਨਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, A ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਿਹੜੀ C ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਮੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ, C ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਕਲੈਰਿਟੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ C ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ E ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ P ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ T ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਢੁੱਕਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਾਂ। ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, COVID-19 ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾ ਅਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਵੀਸ਼ਾ। ਟਵੀਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਟਵੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਕੋਚਰ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਟਵੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਵੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਟਵੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਟਵੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਵੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਸ਼ਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ। Just to talk about what I've done and what I've achieved and how I've made a difference in my community and now starting to make a difference around the world. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ
ਬੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਟਵਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੋ। I've been fundraising since I was 11 years old, and my main motive is to recycle and save and preserve our environment. We have made detrimental damages which are not reversible anymore. Our carbon footprint is massive, and my goal is to reduce that and just help anyone who needs it. ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? The first time I fundraised was in 2017. I was 11 years old, and we were watching the news about BC wildfires, and it was so devastating for me as an 11-year-old to see so many people evacuating and leaving behind so many memories and valuables and just things that are unreplaceable, and I thought I had to help these people. And so I took recyclable tin cans, and I decorated them, sold them, and then with the help of the community I raised $850 or so, and that was my first donation to the Red Cross, and we just never stopped after that. ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ? Mummy and Mummy Papa. there. Yeah. Because they were watching the news with me, and, you know, they're always super, super supportive. And, of course, they do all of the networking when I was younger, and so I could not be here without them. ਪੂਨਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ, ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? Yes, I totally remember those moments. We were sitting on the couch and watching TV, and then she said, "Mom, like, how devastating is this? So let's help people." Okay, what do you want to do? We are there with you. So she said that let's use recyclables to collect the fund or to raise the fund. So इसने वो cans लिए उसको decorate करने के लिए, definitely she was too young to do by herself. So I was sitting with her and we did that. So just to motivate her at that point of time, I still remember कि तवीशा, कल अगर आप ये सारे के सारे बेच के $100 इकट्ठे कर लोगे, so $100 we as a parent will contribute that. अच्छा. Just to motivate. Same amount We will do that. And she did it so good, like she did door-to-door knocking. She went into plazas, stand there, and went to different shops, like ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ. Like she went there and she collected $100 by the evening. Acha. And so said, okay, so $100 from our side. That gave her so much motivation, and then she donated $200 to Red Cross. And then she said, no, I am not stopping here. $200 is nothing for them. Okay. Then she started doing it again, and one of her friend came, said, okay, I will also help. So in her journey, I have seen so many people are coming into and helping her in some or other way. So then again she did it with the help of her friend, me, and one more family. We did it, and she collected around $650 at that point. Okay. And then total was to $850, and at that point of time my husband was working with Shaw Cable. And my husband just took her stuff, whatever she was making, and उन्होंने अपने ऑफिस में अपनी उस पे कैबिन पे लगाया. And then Shaw guys, they said that whatever your daughter will be donating, we will be matching that. Wow. So जैसे चेन बनती चली गई एक के बाद एक. So whatever she has donated, Shaw guys matched that amount, and then that money has gone to Red Cross for BC wildfire. Okay. After that, she said, okay, let us do something more. Like, she is a kind of girl who doesn't stop after doing one thing. Immediately she's done with one project, she will start thinking about the next thing, like what next. So उसमें फिर हमने इसका साथ दिया. She said, okay, she is going on the right path and she wants to help other people. And from there it was never looking back, and then from there it came, Tavisha's helping hand came into the picture. So that was the point. I still remember all that thing. Amazing. So Tavisha,
ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? Oh, I remember I would collect like empty beer bottles and alcohol bottles. And then I ਕਿੱਥੋਂ would, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ? we would ask our neighbors and family and friends to give them to me, and then I would paint them and I would sell them, and that's how I would collect funds. And I remember it was really, really time consuming. ਸੋ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? Yeah. ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? Like Mama said, door to door, knocking on the... ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੀ? ਸੇਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? Yeah. And yeah, that's mostly what I did at the beginning. Yeah, and then after that it happened like हमें सरी टेम्पल वालों ने भी कहा Yeah. कि okay you can do put a stall here. So slowly हमें बहुत लोगों से सपोर्ट मिलता चला गया. And then her orthodontics Dr. Vishal Sharma, he said कि I can see what a wonderful work you are doing. अच्छा. So उन्होंने कहा कि आप एवरी वीकेंड मेरे क्लिनिक पे आओ, यहाँ स्टॉल लगाओ, वट एवर जो बिकता है वो जो आप इकट्ठा करोगे एंड देन यू विल बी डोनेटिंग. देन MLA हैरी बेंस, उन्होंने अपने कम ऑफिस में इसका स्टॉल लगा के रखा कि कोई भी अगर आए ले जाए सामान और उसमें पैसे डाल के चला जाए. So we have got lot of community support when people they saw that whatever she is doing for community, and on the one hand she is trying to save environment, and on the other hand she is donating that money to different charities. ਸੋ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? No, I was 11 when I started. I was in grade 6. Yeah. ਗ੍ਰੇਡ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? Yeah. ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? Mostly they only help with decorating. And as time went on, I guess they realized, oh, we have better things to do. And so they kind of left. And I was like, it's fine. I'm not going to force you to stay, obviously. ਬਿਲਕੁਲ. There's no point of staying if you don't want to do it, right? And so I've been doing it on my own since then. But like now, with the supportive community, is like it's nothing without them. Yeah. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਦੀਆਂ ਫਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? Yeah, mostly it's after I finish a project, I will look at different hospitals or charities or whatever, and then I'll see who is in need right now. And then I'll set a target of like, oh, $600, $500. It's more now, but before it was a lot less. But yeah, I pick a target, how much I want to donate to them, and then as long as it takes to collect that money. Yeah, otherwise, if it's going really slow, I'll try and do other organizations within that. But most of the time, we collect our money in a couple of weeks. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? In the beginning, a lot. I would say at least like 6-7 hours on the weekend, and an hour or two during the weekdays. ਹੋਰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? No. ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? Yeah. ਸੋ ਤਵੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਤਵੀਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? I call it an organization. But is it registered? It's not registered. Yeah, but honestly, I just put a face to everything. I just organize everything. But the community that actually helps me fundraise, like I wouldn't be here, or I wouldn't really be anything without them. Like it's practically all of their effort, and I just put a face to it. ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? Oh, I do BC Children's Hospital a lot. They are such an amazing, they have amazing programs for sick kids.
And Make-A-Wish also, I love their programs for kids who can't live very fulfilling lives. They fulfill their last wish, which is, I think it's the sweetest thing ever. And I've done Red Cross, like I mentioned many times, even for the Australian wildfires. I donated. And during COVID, Surrey Memorial, St. Paul's, UBC and VGH for vaccine study and making the vaccines. And I've donated to, well, it's not a donation, Basal Canada, the butter company. They reached out to me and said, oh, can you give us 200 masks. And so I made the 200, and then we send them to Quebec to another organization called Army of Masks. And they distributed to, I think, homeless shelters and prisons. So they reached out to you. Yeah, and which I thought was absolutely crazy. So ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. I know. I have no idea. I'm just I'm like every other kid in Surrey, and it's amazing. They're multi-million-dollar company, and they reached out to me out of anyone that they could even have gone to professional manufacturers, and they decided to support my cause, which is amazing. ਤਵੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਰੇਜ਼ ਫੰਡਸ ਫॉर ਸਮ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨੇਟ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਆਫਟਰ? I feel very fulfilled. I think there is some sort of satisfaction because I've met really, really selfish people, and you always want to do it for yourself. Me first, me first, me first. And I think the true satisfaction comes from helping others. Like the other day, I got a call from BC Children's Hospital. Okay. And they were telling me that, your donations made an impact on so many little kids' lives. And I thought that was it made me really happy. Honestly, that's the main feeling, happiness and satisfaction. It's like, it's not like a normal kind of happy. It's so different. BC Children Hospital visit ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Just made another donation, I think last week. And yeah, everyone there is so nice. Any hospital you go to, the workers, the people organizing everything, they're under so much pressure, and they keep everything so organized, and they're there to take care of the patients. And by doing my part, I feel like it's only a little amount, like $600 is practically nothing to a hospital, right? But they're still so thankful for that. ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? Oh yeah, mostly positive. But there's also people that think, I'm lying, that I'm keeping the money. Why do they think like that? And how does that impact you? Honestly, I don't care. Okay. Because it's not my problem. It's what you think. I really don't care. Can't change that. But it's kind of odd. I remember on Facebook once, my mom wrote something about me fundraising. And there's one lady, she said, you're lying. I'm like 25. I have 3 houses, blah, blah, blah. And so many people stood up for me, which is quite crazy. Whenever someone speaks against me or my cause, people stand up for me. And I think it's we're a big family now. And there really isn't room for negativity here. That's great. Poonam ji, ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਵੀਸ਼ਾ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? Yes, you are right, and she is also right. She has given one example कि यहाँ किसी ने negative बोला and it happened. उस time पे it was unbelievable.
I was really young at the time too. Yeah. No, it happened. I think last month No, also. that was a different person. Yeah. So I was just telling you that people, so many people, they don't believe and they don't trust. So उस time पे हम दोनों मिलके social media पे we try to handle it in a very positive way. कि, okay, you don't believe, see this, see this, see this. Honestly, Yeah. I feel like I don't really need to prove anything to you. I know what I'm doing. And if there's 100 people supporting me and one person doesn't, it doesn't make a difference because all of the 100 people know that I'm putting their money and their efforts into a safe place. Do you ever feel the need for validation? No, I don't need anyone's validation. या उसका मैं आपको एक चीज़ ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि लोगों ने कितना ट्रस्ट और कितना बिलीव ये इसके ऊपर किया है कि अगर हम सुबह जब अपना घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर लाइन लगी होती है रिसाइक्लेबल बैग्स की. Wow. Yeah. And this is so That's from amazing. the neighborhood. No, everybody come from everywhere. Yeah. And like I'll tell you one family from Port Moody. They came all the way from there with their truck full of recyclables. Wow. And, yeah, they were like, we're not giving it to anyone but you. And so, yeah, there's so many people like that. I've made really, really good relationships with people during my fundraising. And I've also lost a lot of relationships while fundraising. Really? Yeah, because people are like, oh, she... That's surprising. Yeah, Yes. Honestly... Actually, it yeah, happened. It happens. It happened. I'll tell you why. Like, because like she is... she goes to school full time. She goes for swimming. As I told you that she is a competitive swimmer. I swim 7 times a week, and I started working recently, and when... You know, you can tell when people aren't happy for you. Like, whenever I tell some people, oh, I did this over the weekend, and they're like, oh, okay. Oh, I got this award. Oh, okay. I raised this much money. Okay, that's fine. And, you know, they're not really... Appreciative. No, I'll tell you this thing. Yeah, right. She's right. When she used to go to school in grade 7, I believe. जब ये किसी को बताती थी कि भी मैं ये फंड रेज कर रही हूँ फॉर दिस चैरिटी और वट एवर, तो उन लोगों का बच्चों का ना एक, जैसे आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वट एवर, स्नैपचैट और वट एवर. सो दे यूज टू exchange their photographs doing makeup or whatever, and she is not into that. She doesn't have time for that, to be honest. बच्चा सारा दिन स्कूल जा रहा है, शाम को 3 घंटे स्विमिंग कर रहा है. She has to do her homework and then she has to plan for the weekend के कहाँ से रिसाइक्लेबल उठा के लाना है, क्या मैंने डेकोरेट करने के लिए पीसेस बनाने. सो उस टाइम पे इसने ये फील करना शुरू किया कि लोगों ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया बिकॉज आई एम नॉट ऑफ their kind. I am not into makeup. I am not into dressing and all that. Honestly, I used to care so much about what people thought. And then I'm like, when I got into high school, I'm like, why do I care? Why do I care? How did that change? How did you change your perspective? That's interesting to know. I was bullied so much. Really? Yeah. Yeah, so much. Even before I started fundraising, I was just bullied from like grade 3 to 7. Just Bullied for what and why? I don't even know. Like the way that I dressed, which is kind of weird because I went to a uniform school, and then when I started going to like a school that didn't require uniforms, I don't know. I have a very upfront personality. Like I'll say whatever I want. If I don't like you, I will tell you I don't like you, and then I will stay away because I don't feel like I have the time to be fake with people. And there's really no point of being fake with people. Why waste your time and mine, right? And so I guess that's why people avoided me, because I guess people like liars. ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? Yeah. ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? First, I would ignore it, but I remember one time... What would they do? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? You know, avoid me,
call me names, make fun of me, and stuff like that. But I think at one point it was really starting to affect me, and then it like started affecting my swimming. And then, you know, my parents talked to the principal, and then we got that sorted out. But then it still continued because the kids aren't going to stop, obviously. But then I just stopped caring. Like, I don't have time to care for this. You don't like me. I don't care. Stay away from me then. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ ਬੱਚਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ Yeah. ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ I have no idea. ਤੁਸੀਂ ਮਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ No, I didn't really. I still don't like to talk about it. I just feel like it's my problem. I should deal with it myself. So I would, what do you think ਕਿ ਮਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ that is not what I'm saying. I think if it's something really, really bad, yeah, definitely talk about it. Yeah, एक ਪੂਨਮ point- ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ देखो शी वॉज गोइंग थ्रू एंड आई कुड फील इट बट मैं ये चाहती थी कि ये अपने आप मुझे ये बात बताए सो एक पॉइंट जब ये आया जब वंस आई रिमेंबर स्टिल शी वॉज इन ग्रेड 6 इट वॉज जून में स्कूल बंद होते हैं तो इट वॉज April May time and she cried on the breakfast table that I don't want to go to school. Acha. I said okay, I can feel that but Oh you my have God. to tell me what's all going on. I hated going to school at one time. Yeah. You know. So इसने फिर मुझे बताई सारी बात and I said okay then what do you want me to do, should I go to the principal or you want to handle it yourself. okay So she was mum बट लाइक स्विमिंग में इसकी जो टाइमिंग्स थी वो गिरनी शुरू हो गई जो इसकी अच्छी टाइमिंग्स हो रही थी फिर इसके कोच से मेरी बात हुई तो इसके कोच ने इसको समझाया कि तवीशा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इन द स्कूल यू नीड टू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ देम अगर ये सब हो रहा है स्कूल में एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द स्विमिंग थिंग लेट मी नो तो इसने कहा नहीं इट इज़ ऑल इन द स्कूल. Then me and my husband went to the principal and had a talk about it. What was the way, मैं उस वे के ऊपर नहीं जाना चाहूँगी उन्होंने कैसे डील किया वो गलत था या सही था बट मेरा बच्चा उसके बाद ठीक होता है आई एम हैप्पी अबाउट इट. okay सो उसके बाद इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ पंप करते रहे कि वी नीड नॉट टू टेक केयर अबाउट अदर्स व्हाट दे आर सेइंग यू नो व्हाट यू आर. और उसमें मुझे एक पॉइंट पे ये भी पता था बिकॉज ये बच्चे सारे लेट नाइट एक दूसरे को मैसेजेस करना अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजना एंड शी डजंट हैव टाइम फॉर दैट बिकॉज इसको अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 o'clock उठ के स्विमिंग पे जाना है देन सारा दिन स्कूल रहना है होमवर्क करना है फंड रेजिंग शी हैज़ लॉट इन हर प्लेट. हमारे पास इन चीज़ों के लिए नेगेटिव चीज़ों के लिए टाइम नहीं है. And I will appreciate this girl that at after certain point when she went into the high school and मैं इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर रही कि मेरा बच्चा है आई हैव सीन दैट चेंज इन हर कि इसने लोगों की केयर करनी छोड़ दी. तुम बोल रहे हो बोले जाओ मेरे पास टाइम नहीं है इन सब But चीज़ों now के लिए. people think I'm rude or arrogant, and like, you started it. You were rude to me first, and I guess it's. I have a very, very, very small friend circle. but are you happy with this change with this transformation Definitely, yeah. I don't. are you happy with yourself Yes, I'm very happy. I'd rather be alone than spend time with people who put me down. I think no one deserves to feel that way. And if someone is treating you like that, you need to leave. Like, there's really no point of putting yourself through that. Yeah, and then इसके बाद इसका जो सर्कल अब है वो ऐसा सर्कल है I have कि like 2 or 3 friends max. Like, I Yes. don't even have friends at school. But, you know, I'm fine with that. और वो सर्कल ऐसा है जो इसको सिर्फ मोटिवेट करता है. that's right एंड ये कहती है मैं रादर आई विल हैव अ सर्कल ऑफ 15 पीपल हु इज़ नॉट सपोर्टिंग मी आई विल हैव अ सर्कल ऑफ 3 पीपल हु आर सपोर्टिंग मी इन एवरी वे एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट. सो आई एम ओके. ਤਵੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਵੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਿਮਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਵਿਮਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਤਵੀਸ਼ਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? First, I just started as a recreational in India. And then when I came here, after a couple months, I started swimming lessons here. And then I would always see the swim club that I swim with now swimming at the same pool. And I thought, wow, it looks cool. I want to do that.
And so when I joined the swim club, I kept on improving, and I thought, okay, I could really do something with this. And ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ yes, I do. ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ I've done provincials right now, and now I'm working for Western Nationals. ਵਾਓ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯੂਨੀਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਨਾ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ enjoy your life when you are young being old is not fun ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਵੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ Yeah, I definitely agree. When I was younger, I definitely had a hard time finding the balance. And now I'm so busy, I have to make time for myself and for my family and friends. But yeah, it's really important to have that balance. Otherwise, you're going to burn out and you're just not going to love what you do anymore. ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੂਨਮ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ She has learned it because like she has gone through so much stuff in her, like I will not say bad stuff, positive stuff, because I remember मैं और मेरे husband we used to आपको example बता रही हूँ how it all came to in her personality. हम लोग अगर आप कभी उठा के देखें पुरानी अखबारें इंडिया की तो मैं और मेरे husband top donors थे blood के Okay. And that news was there in the newspaper that ये couple जो है हर 4-6 महीने बाद जाके अपना blood donate कराता है ठीक है and me and my husband were too much into community work when we were in India and we were attached to so many organizations and at some point I was vice president of one organization and I was also attached to Red Cross एंड शायद इसने हमें वो सब करते हुए देखा है कि हम कैसे अपनी जॉब्स के बाद वी यूज़ टू हेल्प पीपल वी यूज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड अगर इसकी बात करें कि ये टाइम को कैसे मैनेज करती है डेफिनेटली इट इज़ टू हार्ड फॉर हर सो आप ये देखिए जी पिछले आई थिंक 2-3 वीक्स बैक शी हैड अ वैक्सीनेशन ऑफ दिस कोविड एंड अगले दिन हम कायाकिंग करने चले गए अच्छा कोई दर्द नहीं कोई कुछ नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं सो वी ट्राई टू डू ऑल दैट स्टफ अलॉन्ग विद वट एवर शी इज़ डूइंग डिपेंड्स ऑन हर टाइमिंग हर अवेलेबिलिटी अब ऐसा वैसे हम हर वीकेंड पे हमारे पास एक लिस्ट तैयार होती है कि इतने लोगों ने हमें रिसाइक्लेबल्स देना है उन्होंने हमें ऑलरेडी हर वीकेंड ऑनगोइंग चलता ही रहता ये कभी स्टॉप नहीं होता अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो आके हमारे घर के बाहर रख जाते हैं हमें पता भी नहीं कौन रख कर गया है एंड दे आर हेल्पिंग एंड दे आर ट्रस्टिंग देयर ट्रस्ट इज अप टू दैट लेवल दैट दे डोंट इवन आस्क कि आप कहाँ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो आप वो पूछते भी नहीं है बाहर रख जाएंगे हम सुबह उठेंगे ओहो इतने बैग्स आए हुए हैं उठा के हमने गैराज में रखना है उनको एंड देन वी विल सॉर्ट इट आउट और वट एवर वी हैव टू डू इट एंड कुछ लोग हमें ऑलरेडी फ़ोन कर देते हैं बिफोर हैंड इस वीक आप यहाँ से उठा लो हम लोग पोर्ट मूडी तक जाते हैं रिसाइक्लेबल उठाने कोकोटलम पोर्ट मूडी एंड आई थिंक वंस वी वेंट टू चिलावैक दैट फैमिली सेड कि हमारे पास इतना है कि लाइक वी कैन ब्रिंग इट हियर बट आप अगर हमारे यहाँ से लेकर रिटर्न डिपो में वापस करके अगेन कम टू आवर प्लेस एंड पिक अप एंड गो टू रिसाइकल डिपो सो वी डिड दैट टू एंड इट वॉज पोरिंग आउटसाइड and 3 of us were in the car and we were doing this stuff so कुछ चीज़ों को इसने हमसे सीखा है कुछ हमारे बच्चे ने
टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं अगर बात करूँ, सो शी इज़ सो गुड, समटाइम्स वी लर्न फ्रॉम हर. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी इज़ इन द स्कूल फुल टाइम, अभी तो कोविड की वजह से कुछ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कुछ स्कूल में जाती है ये. जब इसकी फुल टाइम क्लासेस थी, आई स्टिल रिमेंबर कि ये कहती थी मम्मी बाकी सारे बच्चे बैठ के कैंटीन में बाहर जा रहे हैं अपना लंच लेने के लिए या बाहर घूम रहे हैं. आई स्टिल रिमेंबर शी टोल्ड मी कि इसने मुझे, मैं जब इसके स्कूल गई मीटिंग के लिए, तो इसने मुझे वो कॉर्नर दिखाया कि मम्मा देखो स्कूल में ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर में मैं अपना लंच लेके बैठ जाती हूँ और सुबह लंच से पहले जितनी क्लासेस हैं उसको होमवर्क मैं वहीं बैठ के कर लेती हूँ कि खाते खाते फटाफट होमवर्क कर लूँ, बिकॉज शाम को जो बाकी 3 क्लासेस का होमवर्क होगा वो करना है, प्लस आई हैव टू गो टू स्विमिंग. अच्छा. आई डोंट हैव टाइम कि मैं, क्योंकि कई बार इसकी स्विमिंग होती है, स्कूल ओवर हुआ साथ ही इसकी स्विमिंग शाम को 2.5 आवर्स की. सो वहाँ से वापस आएगी, शी हैज़ टू डू अदर होमवर्क, शी हैज़ टू ईट डिनर एंड गो टू स्लीप एंड रेडी फॉर, और अगले दिन इसकी स्विमिंग सुबह 4 बजे है. वाओ. So she is so good in managing her time कि मेरे पास बैठ के लोगों के साथ गॉसिप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी शाम की स्विमिंग का टाइम है. एंड वीकेंड्स पे जो लिस्ट हमारी तैयार होती है वो फिर हम लोग प्लान आउट कर लेते हैं कि ओके सैटरडे मॉर्निंग इस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है, इस एरिया में जाना है. और अब हमने एक काम किया कि रिटर्न डिपो में हमने एक अकाउंट बना दिया है इसका, जिसमें पीपल कैन put all their recyclables in the blue bag और transparent bag. Go there, वहाँ पे इनकी एक मशीन लगी हुई है जिसमें आप, अगर हम आपको कोड बताएं अकाउंट का, वो अकाउंट का कोड डालो, लेबल्स निकल आएंगे. अच्छा. Put that label on the bag and keep it there. They will sort it out and they will put that money in her account. ओके. सो वी आर डूइंग इट इन अ वे कि इसके लिए थोड़ा इजी हो जाए, हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए और इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिले. और अगर इसकी ये गिवर नेचर की बात करें कि हाउ शी इज़ इनटू इट, आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन इंडिया, शी वाज 5 व्हेन शी केम हियर. व्हेन वी वर इन इंडिया, अगर वहाँ इसको कोई बैगर या कोई ऐसा नीडी पर्सन नज़र आता था तो शी यूज्ड टू कम टू मी. मेरे बैग में इसने हाथ डाल के मुट्ठी में जो पैसे आ जाने, अच्छा, चाहे वो 1 रुपया आया है, चाहे वो 100 रुपीज़ आए हैं, चाहे वो 500 रुपीज़ आए हैं, शी विल गो एंड गिव इट टू देम. अच्छा. एंड आई सेड Tavisha, what did you do? He needs, I gave it to him. अच्छा. ही इज़ नीडी. एंड द अदर थिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीडी लोगों को, इसने गिवर की इसकी एक क्वालिटी हमने ये देखी जब ये छोटी थी. कोई हमारे घर आना, इसके पास जितने भी टॉयज़ होते थे, एंड इट डिडंट हैपन इन इंडिया, इन कैनेडा टू. जो भी चीज़ इसके पास, इसकी फेवरेट टॉय होना या कुछ भी होना, और किसी बच्चे ने आना और उन्होंने कह देना हमें ये टॉय पसंद है, मे बी दैट इज़ हर फेवरेट टॉय, शी विल गिव दैट टू दैट पर्सन. ओके ले जा, घर ले जा, तेरे को पसंद है, कोई बात नहीं. सो जैसे अपन पंजाबी में थोड़ी बहुत मुझे जो आती है उसमें हम ये कहते हैं ना, घर के भाग दौड़ियों से ही पता चल जाते हैं. हमें लग रहा था ओहो, शी इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ गिवर. एंड आगे से ये एक्सपेक्ट कुछ नहीं करती थी कि मुझे कोई कुछ दे, हमने दे देना है बस उसको उठा के सामने वाले को. सो दैट क्वालिटी केम इन टू हर. एंड आई थिंक जब वो BC वाइल्ड फायर वाला हुआ तो 2+2 is 4, आप देखते हो बचपन में भी ये सब कर रही थी ये, और यहाँ पर जब कनाडा में भी आई, चाहे वी वर स्ट्रगलिंग, वी वर न्यू, बट कोई भी महंगा खिलौना हो, इसने किसी और को पकड़ा देना. तो वी एज अ पेरेंट्स, मी एंड राजीव, वी हेल्प्ड हर एंड वी वर ऑलवेज स्टैंडिंग बाय हर. ये किसी को भी, एक दिन जब इसने BC चिल्ड्रन हॉस्पिटल को दे दिया, BC कैंसर को दे दिया, तो एक दिन कहती आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर मेक अ विश फाउंडेशन. अच्छा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट कि ये फाउंडेशन है क्या. एंड शी वॉज, आई रिमेंबर इट, ये पीछे कार में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा तविशा ये कौन सी फाउंडेशन है. कहती है ये वो फाउंडेशन है जो सिख बच्चों की, दोज हु आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइव्स, और जिनकी लाइफ बहुत सिकनेस की वजह से ख़राब है, उनकी ये लास्ट विशेस फुलफिल करती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा. एंड आई रियली वॉन्ट टू गिव टू देम. एंड आई सेड ओके लेट्स स्टार्ट देन. फिर इसने उस टाइम पे अल्कोहल, बियर या कोई भी ग्लास बॉटल्स को इसने डेकोरेट किया. एंड देन आई वांट टू पुट लाइट्स इनटू इट. ओके, देन वी सेट ऑन Amazon एंड सॉ दैट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दोज. तो आइडियाज़ इसके होते थे और हम लोग बस इसके साथ खड़े हो जाते थे. देन शी हैड एन आइडिया कि ये पॉप कैंस जो हैं या पॉप बॉटल्स जो हैं, ये लोग फेंक रहे हैं ऐसे, या लैंडफिल्स भर रहे हैं उसमें. इसने उनको काट के सेल्फ वाटरिंग प्लांटर्स बनाए पॉप बॉटल्स के. अच्छा. एंड पॉप कैंस के इसने लैंटर्न्स बनाए. एंड
सपोर्ट की बात अगर मैं इस पॉइंट पे करूँ तो आज भी जिन लोगों को हमने वो लैंटर्न्स जिसने तविशा को सेल करे हैं उनके घरों के बाहर आज भी लटक रहे हैं. अच्छा. एंड दैट इज सो अमेजिंग टू सी दैट हाउ पीपल सपोर्ट हर इन अ डिफरेंट वे. हर ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सारा कुछ ही पॉजिटिव हुआ है, बहुत कुछ नेगेटिव भी हुआ है. जैसे कई लोगों ने कहा हाउ डू वी बिलीव कि ये पैसा कहाँ जा रहा है. बिल्कुल. हाँ हाँ. क्वेश्चंस भी आते थे, ऐसी बात नहीं है, जायज़ है ना. और उनके को क्वेश्चंस जायज़ भी हैं. अब उनको आपने कन्विंस कैसे करना है. तो एक पॉइंट पे जैसे बिकॉज शी वाज टू यंग टू हैंडल ऑल दीज क्वेश्चंस, so me and Rajiv used to sit and used to send them all everything, see this, see this, see this. Still you don't believe it, that is perfectly fine. But इससे ज़्यादा हम आगे बढ़ के आपको प्रूव नहीं कर सकते कुछ चीज़ें. समटाइम्स योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. सो इसका जो काम था फिर जब लोगों ने देखा, और आज भी, आज शी इज़, आई शुड से वी आर प्रिविलेज्ड और वी आर ऑनर्ड दैट पीपल अब हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन हर सो मच कि अब जब वो इसकी हेल्प करते हैं, और कई लोग हमें इसको कैश डोनेशन भी देते हैं. दैट इज़ ऑन आवर वेबसाइट कि अगर आपने डोनेशन देनी है तो आप यहाँ दे दीजिए. तो लोग अब वहाँ पैसे डाल देते हैं. वी कलेक्ट ऑल दैट मनी, वी गिव टू द कम्युनिटी बैक. और जब ये मास्क बना रही थी, यू वोंट बिलीव, इस एज के बच्चे उस टाइम डिप्रेशन में बैठे हुए थे एंड दे वर नेगेटिव ऑन सोशल मीडिया. I still remember she used to sit on her machine for 8 hours straightly. Wow. सिर्फ बीच में उठती थी जब स्विमिंग की ड्राई लैंड होती थी, बिकॉज उस टाइम स्विमिंग बंद थी. तो सोइंग किथों सीख ली? I actually did. It was mandatory because you have to do a course in eighth. Well, it's not mandatory anymore, but when I was in 8th grade, you have to. So skill सीख लिया सी तुसी? Yeah, it was like textile skills and like cooking and stuff like that. And I only did it for like 4 weeks, and you know, honestly, I didn't enjoy it. But like I got the basics down, and then, you know, it was very tedious in the beginning, but then after you get into like a sort of like a flow, and you know what you're doing, and you're not making any mistakes anymore with the masks. So it became really, I was able to make like 70 masks an hour at one point of time. Yeah, she was so fast. And it was not, again, it was a teamwork. जो sewing, हमने जो mask, imagine करो, mask हमने बनाने का कहीं से ट्रेनिंग ली, YouTube. अच्छा. उसमें देखा, अच्छा इतना इंचेस का इतना रखना है, इतने इंचेस का इतना रखना है. सो वो टीम वर्क के अंदर मैं खाली, मैं, मेरे हस्बैंड, और इसकी बात नहीं करूँगी. हमने जब इसने तविशा ने मास्क बनाना शुरू करा, उस टाइम तक इसकी जो वेबसाइट है वो मार्केट में नहीं आई थी. इसके अंकल हैं इंग्लैंड में, माय सिस्टर्स हस्बैंड, जिनको ये डैडी बुलाती है प्यार से. अच्छा. उन्होंने कहा कि मैं वेबसाइट लॉन्च कर देता हूँ. ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर. उन्होंने वेबसाइट लॉन्च करी, और क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया था, इतने ऑर्डर्स मास्क के आए कि रात को मेरे हस्बैंड को बैठना पड़ता था 2-2 घंटे टू मेक अ लिस्ट ऑफ दैट ऑर्डर्स. अच्छा. क्योंकि वो ऑर्डर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, नॉर्मल मैसेज पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे. तो आपने सारों का इकट्ठा करना है ऑर्डर. दैट वाज बिकमिंग वेरी टीडियस फॉर अस. हमने इमीडिएटली लॉन्च करी इसकी वेबसाइट, और फिर वहाँ सारे ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए. और एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ पे माय हस्बैंड यूज्ड टू मेक अ लिस्ट, मैं उसको रात को बैठ के कपड़े को, क्योंकि इतना बच्चा अकेला, उसने अगर सोइंग करनी है तो वो काटेगा कब और ये सब कब करेगा. हम उस ऑर्डर्स की सारी तैयारी रात को करते थे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के. सुबह ये उठती थी और उठ के अपना मशीन पे बैठ जाती थी. वाह. एंड कम्युनिटी हेल्प की बात मैं ऐसे करूँ कि हम लोगों के पास इतना ऑर्डर आ गया कि खाना बनाने का टाइम नहीं. एंड एट दैट पॉइंट सम ऑफ द फैमिलीज केम अप, और उन्होंने हमें खाना बना के दिया कि तुम कम्युनिटी वर्क कर रहे हो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं. ऐसे सो कितने मास्क बनाए तुसी? आइडिया कोई? Hundreds. No, it was around, total if we say around 1,500 masks. Yeah. And that was single-handedly made by her. We were helping her in cutting and keeping stuff ready for her. And she used to do that. And क्योंकि आपने मास्क बना दिया, उसके कितने सारे स्टेप्स हैं. क्लीनिंग भी करनी है, कोई थ्रेड तो नहीं निकला हुआ. उसमें माई हस्बैंड यूज टू हेल्प. ही यूज टू सिट इन द इवनिंग एंड जस्ट कट ऑफ ऑल द थ्रेड्स एंड ऑल दैट. अच्छा. सो एंड we three were working, should not say we three, lot of people were working behind the curtain, which they didn't come in front, but पीछे से हमारी हेल्प कर रहे थे. जैसे एक टाइम पॉइंट ये आया जब हमारे पास इलास्टिक खत्म हो गया. अच्छा. मार्केट में सरी में इलास्टिक नहीं.
ਵਾਹ Yeah. And she put it on the social media. So many people who took mask from her, they said, okay, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा Oh है. yeah, and people also donated fabrics Yeah. too. Yeah. ਹਾਂ So community ने बहुत help करी उस time पे इसकी. ਤਵਿਸ਼ਾ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ Oh my. At one time, I hated the sewing machine. Like, I don't even want to look at it anymore. But like, But like, I know the masks I made and the money I make from them was helping the people suffering right now. ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ Yeah, my machine broke. Whenever the machine like broke down or something happened, like it's really, really frustrating. but like उस time पे इसने इतनी हिम्मत रखी कि फिर यहाँ पे हमें कहीं समझ नहीं आता था हम कहाँ से मशीन को ठीक कराएं. इतने मास्क अगर मशीन पे बन रहे हैं, एंड कुड यू बिलीव हमारे पास आज तक अपनी मशीन नहीं है. We don't even have a sewing अच्छा. machine. हमें no. कम्युनिटी ने मशीन दी. वाह. एंड दैट टू कि ले लो जितना काम करना है करो इससे. Yeah. और आज भी हमारे घर में उन लोगों की मशीनें पड़ी हैं क्योंकि कभी भी मास्क के ऑर्डर आते हैं. और मैं मतलब मैं कह रही हूँ बिहाइंड द कर्टन कितने लोग हेल्प कर रहे हैं. तो जो अवार्ड्स इनको मिलते हैं तविशा ऑलवेज सेज it's I just put a face to it. It's the entire community's work. Like I totally agree. I can't make all of this money by myself. It's all of their work, really. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟਾਰ salute to her parents. Wow, I am so happy. Wow. So proud feel ਕਰ ਰਹੇ Good luck, yeah, good luck. God bless her. She is amazing. Thank you. I wish I can see her picture. ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank you. ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨਸ ਵੈਨਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਵੀਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਇਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਵੀਸ਼ਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ Yeah, it's the Princess Diana Award from UK. It's from the royal family. And if you ever read about Princess Diana, she was a humanitarian fundraiser. She did volunteering. At one point, she was connected to over 100 charities. And she was always giving. She was so kind, selfless, and she was just such a beautiful person. It's so sad she passed away so early. But yeah, this award goes to any person who is doing their part in their community. You know, being selfless, helping others, you know, fundraising, volunteering, improving life for others. And so thousands of applications go in every single year, and only 400 people around the globe they get selected. And this is probably the biggest honor of my life. It's like the mother of all awards, and no one could ever be like Princess Diana was. I don't think anyone can even get close. We can only try because she was such an amazing person. She's done so much. And it is such a great honor to receive this award. Honestly, I don't even do this for the awards. I don't even want the recognition. I just want to be able to make a positive impact in my community and around the world. And also, there's another international organization called Sir Optimist. I got their Violet Richardson Award. Violet Richardson was also humanitarian, and there's an award in her name which I received, which I'm really, really thankful for. Well, congratulations. Thank you. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਅੰਡਰ 25 ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Yes. Congratulations. Thank You deserve it.
Thank you. But really, everything goes out to my community and to anyone who supports me. And even to the people who don't support me, because they give me the motivation to, do better. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਨੇਜਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ Of course, like any other teenager, I do have my own personal accounts on social media. ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਅਰਡ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ Honestly, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਲੱਗਦੀਆਂ How do you find them? I do find them meaningless. I feel like it's a waste of time. But I use social media to... Why do the kids do that? I guess it's like trends and stuff like that. People feel like they need to show that they're perfect and stuff like that. But I know that I only use social media to, connect with people and talk to my friends. And that's just my private account, right? And then on my public account for my fundraising organization, I always want to spread positivity. And honestly, yeah, I would say I'm addicted to social media too. Okay. Yeah, it's you can always learn stuff from social media. ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ Like, what do you mean? ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਅੱਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੋ ਲਿਮਿਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ No, because first of all, I don't really get time to do it anyway. So when I do get time... ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ नहीं बिल्कुल सही to be very honest she is right in that way कि she doesn't have time to that. अब जैसे अगर हम सपोज ये बात कर लें कि हम यहाँ से पोर्ट मूडी जा रहे हैं रिसाइकिल उठाने के लिए रास्ते में हमारे पास टाइम है सोशल मीडिया पे देखने के लिए ठीक है सो हम लोगों ने एज अ पेरेंट इसको रात को जब ये सोने जाएगी इसका जो फ़ोन है वो हमारे पास आ जाता है ਤੁਹਾਡੀ ਚॉइस है या ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ चॉइस है नहीं हमने एक लिमिट इसलिए लगाई है बिकॉज इसको सुबह 4 बजे उठना होता है स्विमिंग पे जाने के डेली हफ्ते में पहले 3 दिन जाती थी अभी जुलाई के अंदर सेशन जो है चेंज हो गया लाइक शी यूज्ड टू गो ट्यूसडे मॉर्निंग Friday and Saturday. Friday and Saturday. No, sorry, Friday, Sunday. Friday and Sunday, yeah. So ਤੁਸੀਂ अर्ली मॉर्निंग ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ अर्ली 4 ਵਜੇ Honestly, I'm so used to it now, it doesn't even matter. But I love sleeping. Like, ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋ I don't know. I try to go bed as early as I can. Sometimes 11, but I like to go to sleep around like 9. इसका हमने पिछले साल तक ये नोट किया था कि चाहे सुबह स्विमिंग हो नहीं हो इसने 8:30 पौने 9 बजे अपने कमरे में चले जाना है ओके बिकॉज एक हैबिट ही बन गई थी इसकी क्योंकि सुबह 4 बजे जब उठना है तो आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो सुबह आप स्विमिंग नहीं कर सकते बिल्कुल तो अब जुलाई में भी पूरा जुलाई ऐसा ही है अर्ली मॉर्निंग स्विमिंग्स है और एक बीच में एक दिन थोड़ी सी लेट है बट वो मिड ऑफ द डे है कि 10 बजे से 1 बजे तक सो हम कई बार इसके साथ हंसते भी थे हम दोनों कि तविशा कल स्विमिंग नहीं है अगली 4 दिन छुट्टियां हैं तू 8:30-9 बजे सोने क्यों जा रहे हो वाई यू आर गोइंग कहती मम्मा अब मेरी बॉडी की आदत ही वैसी बन गई है कि आई नीड टू गो टू बेड एट दिस पर्टिकुलर टाइम बिल्कुल तो सोशल मीडिया की बात अगर हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है हर चीज़ में शी इज़ स्टडिंग शी इज़ गोइंग फॉर स्विमिंग शी इज़ डूइंग सो मच फॉर द कम्युनिटी तो कुछ टाइम अगर ये बैठी भी होती है तो हम कुछ नहीं कहते हैं कि चल दैट इज़ हर ओन टाइम ਤਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ I love music. I actually I did band until grade 9. So grade 7 and 8 I played alto saxophone, and then in 9th grade I lost my mind and then I did the bassoon. And then the bassoon didn't work out. And then recently I just bought a electric guitar, and I hope to learn that soon. But I love music. I love how
complex it can get because musical theory is very difficult. But it's so beautiful. I love learning new instruments. ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? Oh, I knew this question would come. Honestly, I don't know. ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ. I mean, I've thought about it a lot, but whenever I think about it, I do stress out a lot. But I know I can leave it till later. I can leave it till next year. That's fine, ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. I know. I was thinking optometry. I wanted to do gynecology, but then I'm so scared of blood. So law was an option, or I wanted to do automobile engineering because I love cars. Something I'm really passionate about. And so we'll see where life takes me. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. My parents have invested a lot of time in me, and I think that's really important because I see a lot of kids who I wouldn't say they're neglected, but they're just given money and materialistic things instead of values. And also my parents treat me as an equal. My opinion is also valued. Like, let's say we're about to invest in something big, like a car, house, whatever, right? My dad will always ask for my opinion, and my parents will always say, what do you think? What do you think is right? What do you think is wrong? What do you think we should change? And, you know, that's important because I'm learning how to share my opinion and how to accept the opinions of others too. ਕਦੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? Like what? ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ no, I cannot do this. I'm scared of this. Yeah, of course, everyone has their own doubts. I definitely had doubts when I was getting bullied, but now my parents definitely helped me overcome that. Like, oh, koi nahi, it's fine. You can get it done. And they never did that, oh, you're a girl, don't do this. Oh, only boys can do that. That's just not how it works in our family. And I'm really thankful for that they're treating me as an individual and equal, and they're respecting my opinion. ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? Role model? Yeah. I would say Mummy. She's so organized, driven, passionate, and she's just so educated, and I really respect that. ਜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? Definitely not. No. No? I don't think I would be anywhere close. Like, parental support is really, really important. Yeah, we always say that action speaks louder than words. अगर आप सिर्फ बच्चे को कह रहे हो ये करो, that doesn't work. आपको उसके साथ लगना पड़ेगा. At one point of time when we had so much of recyclables, I can show you pictures. Me, Rajiv and 3 of us were working together into that. अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि recyclable उठा के लिया उसके बाद का काम सारा तविशा का है, doesn't make any sense. She won't be able to do by herself everything. So we as a family work together to help her. And अगर हमारे घर में आज एक छोटा सा, आपको छोटी सी एग्जांपल, एक पेंसिल भी अगर हमारे घर आनी है ना जी, हर ओपिनियन मैटर्स. राजीव ने सीधा कहना है या मैंने सीधा कहना है, तविशा तुम बताओ बेटा, ये जैसे कल ही कोई बात हो रही थी कि ओके वी नीड टू टेक अ कार. हाँ, राजीव ने कल ही आई थिंक ये बात बोली है तविशा को. Yes, I love cars, and he said, तविशा आई नीड योर ओपिनियन. चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे गूगल करके देखो, बट आई नीड योर ओपिनियन फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड. सो हम लोगों ने हमेशा ही, चाहे हम कितने बिजी हों, हम लोगों ने जब भी कोई भी डिसीजन लेना, छोटा डिसीजन भी इसके बगैर नहीं लिया जाता. अच्छा. और ये अब की बात नहीं है, बचपन से हमने मतलब एक चीज़ इनकलकेट करी कि यू हैव टू बी अ पर्सन हु हैज़ टू गिव अस ओपिनियन. और ये चीज़ इंडिया से ही चली आ रही है कि इसके बगैर हमने कोई भी डिसीजन, चाहे हमें लगता है कि इसका डिसीजन गलत है, देन वील सिट एंड डिसाइड, एंड देन अगर ये उस चीज़ के लिए कन्विंस है, then we'll go ahead, otherwise we'll stop and there and we'll look after other thing. So
और एक चीज़ जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखी वो इसको भी कही और इसको भी तविशा को भी सिखाई, बाहर निकलो, गलती होती है करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ, करके आ जाओ और तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं अपने फादर का देती हूँ आपको, जो हमने इसके अंदर डाला। फिर मैं आई थिंक आई वाज इन ग्रेड 11, मेरे फादर ने कहा कि बेटा ये ना क्या नाम FD मैच्योर हो रही है, तो तू आते वक्त कॉलेज से आते वक्त, नहीं आई वाज इन स्कूल, आई वाज इन ग्रेड ईयर 1 इन योर कॉलेज, तो बेटा कॉलेज से आते आते मैनेजर से ये उठा के ले आना। जब मैं वहाँ गई तो मैनेजर ने मुझे ये कहा कि बेटा जी पापा ने कह तो दिया है बट इसका एक ऑप्शन और है, ये कर लो तो इससे बेटर रहेगा। आई इमीडिएटली, वहाँ उस टाइम मोबाइल कहाँ होते थे, उनके फ़ोन को उठाया जो अपने घुमा के मिलाने वाले फ़ोन होते थे, पापा को कहा कि भाई अंकल ऐसे ऐसे कह रहे हैं, कहते ओके टेक योर डिसीजन। तो मैंने कहा पापा 50,000 रुपीज़ मैं कहाँ डिसीजन, गलत होगा, 50,000 डूब जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन तू ही लेगी। अच्छा, सो आई टुक दैट डिसीजन एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई गॉट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, यस आई कैन डू इट। वही चीज़ हमने इसके अंदर डाली। जब ये अटक जाती है ना कहीं पे, टेक योर डिसीजन, गलत होगा वी विल मैनेज, बिल्कुल, हम उस लॉस को बर्दाश्त कर लेंगे, बट जो तेरा कॉन्फिडेंस उसने जो बढ़ाना है या वट एवर करना है उसके लिए हम ओके हैं। एंड शी गॉट इट। वाह। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਨਮ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪੇਰੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਵੀਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਵਾਓ, great, congratulations again. Thank you. And we wish you good luck. ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ। ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਵੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮੈਨਸ ਵੈਨਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।